it was a long, exhilarating, league stages, right? That we had so far. Hmm. 55 matches had to be played, and seems like it was just yesterday when we began our journey. But finally, it boils down to this one final matchup, folks. 54 games already over. Welcome back. You're watching eISL Season 2, brought to you by Northwind Gaming. I'm Fixes. I'm joined Hmm. along with TTR as we head into the final battle. That is going to be between Bengaluru FC taking on ETT's home club. That is going to be East Bengal FC. Their final matchup, but nothing really is up for the storylines apart from just playing for the bragging rights. So TT, East Bengal FC को आखिरी बार देखने को मिलेगा কেমন আছো? खूब ভালো আছি বাই দ্য वे लाइक अगर मैं देखूं पूरे सीजन को तो हाँ उतना खुश नहीं रहेंगे फैंस भी और वो खुद भी, लेकिन आखिर में एंडिंग में आते आते धीरे धीरे करके इम्प्रूव कर रहे हैं। एंड देखिए हार जीत तो रहता ही है। पिछले सीजन काफी अच्छे परफॉर्म किए थे और इस सीजन थोड़ा डाउनफॉल गया, बट नेक्स्ट सीजन फिर से ट्राई करेंगे। बट आज जो ये गेम है, इस गेम को मैं फुल्ली एंजॉय करना चाहता हूँ क्योंकि ऑपोजिट पे आने वाले हैं बैंगलोर एफसी और वो भी एक सुपर पावर है इस पूरे EISL सीजन 2 के अंदर। तो उनके साथ भी इधर वीरेंद्र, और आप देखिए इस बंगाल एफसी के जो आखिर के लाइक 4 फिक्चर थे वो चारों बहुत ज्यादा टफ थे। उसके बावजूद भी ठीक ठाक गेम्स गए हैं, मतलब हारे जरूर है बट ठीक ठाक गेम्स गए। बट आज का जो ये मैचअप है, मैचअप नंबर 1 अक्षत वर्सेस सीजे, बहुत मजा आएगा ये देखने में। और उसके बाद आखिरी गेम, दोनों बंगाल बॉयज जो है एक दूसरे के खिलाफ भिड़ने वाले हैं। एक तरफ 7 ऑन द हैंड साग्निक, और देखते हैं क्या होता है। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। Yeah, because Akshat and CJ matchup, I'm really excited because not a lot of players have managed to beat CJ, right? And I remember, I think that first excruciating loss came in when he lost to Shubham, if you remember that game. And then next up we had Akshat and Shubham, where Akshat beats Shubham. So if you just put A plus B and that equation, then you would ideally think that maybe Akshat can best out CJ, but of course CJ is going to be one of the clear favorites to win the first matchup. But Akshat, he has given us a lot of surprises in this season's EISL, and especially when you bring in that experience that CJ carries along with himself, and that natural ability where it feels like he was just born for this, and his purpose in life is to be not just be the best player in India and not one of the best in South Asia, but also to go on, just carry the hem even in the global stages, which he's done so far, and we're hoping that he continues doing so. But so far, it's sort of a mixed feelings run for Akshat, and has been quite similar to last season. The only difference was Akshat was kind of struggling a few days. Some days he was phenomenal. Eventually he got his footing, and now, like you said, like those final 4 games that East Bengal FC had were against the top dogs. So it was kind of really difficult and very hard to expect them to go on to win. But I think they were kind of hit with that blow right on their head when they lost that Kolkata derby, right? Ever since, we kind of lost that spark from East Bengal FC, and that is where Benno 7 was absent. And that sort of showed in their remainder of the matches that they had to play. But yesterday, I think that little bit of a break was much needed, because yesterday East Bengal FC looked really good. And despite the result, I kind of liked what I saw from that side, as right from the get-go you could see Akshat right attacking TT. शुरुआती 2 मिनट के अंदर जिस तरीके से अटैक पे गए थे, कुछ ज्यादा ही आज एग्रेसिव माइंडसेट के साथ उतरे। बट सीजे देखें, सीजे उनके दिमाग में बहुत कुछ एक साथ चलता है। बोल ही रहे थे और गोल भी हुआ, और जस्ट यही तो होता है। पहला अटैक इधर अक्षत की तरफ से गया 2 मिनट और 30 सेकंड के आसपास, फिर सीजे कमबैक किए, 5 मिनट में गोल मार दिए। तो इधर 1-0 का सिनेरियो और सीजे इसी तरीके से गोल मारते। तो सीजे से जीतना ये तो बहुत ज़्यादा टफ टास्क है। शुभम करे गए थे, बट देखिए वो शुभम के लिए भी ऐसा नहीं है कि वो हर बार करते हैं, वो कोई बार होता है।
और वो किए हैं। सीजे को हराना सच में बहुत ज़्यादा टफ है, पर देखते हैं क्या अक्षत करके दिखा पाएंगे कि नहीं। फिलहाल के लिए अटैक पे तो जाने की कोशिश चल रहा है विथ थियो हर्नांडेज लेफ्ट विंग के ऊपर, बेलिंगम टू रोडलीत, बट बॉल छीना जाएगा। एम्बापे रन ऑलरेडी निकाल चुके हैं। जिस जगह पे बॉल इनको मिला है, एक पास के साथ गेम इधर घूम सकता है, बट नो नो नो, इधर रोडलीत ने ही इधर चेज किया और बहुत ही अच्छे तरीके से अक्षत इधर बॉल छीनने में कामयाब तो हो चुके हैं, बट आउट ऑफ कंट्रोल गए। ये अनएक्सपेक्टेड था। Yeah, quite unexpected, but Bengaluru FC, they get that first chance on goal and they score, and that is the beauty of CJ. At this point, I think for CJ it would be like to try and score maybe 8 goals and then get leveled up with both Crusher and V Sharma as he looks for his second with Kylian Mbappe has found room for Lionel Messi, but it hits the crossbar. All right. I mean, that would kind of hurt you. But yeah, CJ is pretty chill at this point, still, vying and trying for that goal. But for Rakshat, look at him, always trying to go in to charge for that tackle, does not want to keep CJ on the ball a lot. And CJ, I think, is capitalizing on that opportunity. Look at how, with finesse, he's making those passes this time. You can see Akshat fielding Donnarumma. Interesting. एंड आई थिंक विद Donnarumma आपका देखिए इधर गलत जगह पे बॉल लूज कर चुके हैं रोनाल्डो, बट कंट्रोल नहीं कर पाया। लाइक रोनाल्डो टू रोनाल्डिन्हो अगर फर्स्ट टाइम पे हो जाता तो शायद इधर एक और गोल आ जाता, बट हालांकि जब भी हम लोग सोचते हैं कि शायद अटैक हट चुका है, उसी टाइम पे सीजे फिर से एक बार बॉल छीन के राजी हो जाते हैं कि या लाइक आई एम रेडी, लेट्स गो नेक्स्ट गोल के लिए। बट फर्स्ट 22 मिनट्स के अंदर जिस तरीके से एकदम पहले ही मिनट पे अटैक देखने के लिए मिला था अक्षत की तरफ से, उसके बाद से और अक्षत को वैसा मौका मिला नहीं है। सीजे कंटिन्यूसली हाई प्रेसिंग इधर करते हुए दिख रहे हैं, कंटिन्यूसली वो गोल के आसपास जाके मंडरा रहे हैं ईस्ट बंगाल एफसी के, जिसकी वजह से प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है और अक्षत को बहुत ध्यान से इधर खेलना पड़ रहा है। और यही चीज़ इनको जो है वो अभी के लिए थोड़ा सा जो है पीछे धकेलते हुए दिख रहे हैं। बट फाइनली वन मोर टाइम सीजे, बॉल अभी भी लाइन के ऊपर था और एक कॉर्नर के साथ खत्म होगा। God, CJ is constantly just battering down Akshat like a ram, right? Way he's I mean, it's already 27 minutes past. Yes, Akshat has created 2 opportunities, but CJ always in his attacking half, and Akshat is trying to defend the ball. The big question over here is how long can Akshat keep him at bay, right? CJ has already managed to score 1, and the second definitely looks coming. And for Akshat, that's going to be the game plan, is to play clearly on those counter attacks, because when CJ commits, if he commits all his forces, that is where Akshat could find that opening, could just thread the needle and score an equalizer. We really can't rule Akshat out from the equation, because even against Saranj, Akshat still managed to score a few goals. And so he's the one player who can surprise us, and he's one of those talents that we've seen develop from eISL. But no stopping this phenom CJ, as he is on a path to make a statement that when he's going to meet everybody on land, he's out for blood. सीजे लाइक का ये नाम जब भी आ जाता है, उसी टाइम पे कहीं ना कहीं लोग जो ओपोनेंट पे रहते हैं वो थर करके दौड़ते हैं, क्योंकि वो कुछ इस तरीके से खेलते हैं। पहले ही 36 मिनट के अंदर 2 गोल स्कोर कर चुके हैं, और जिस तरीके से वो अटैक बना रहे हैं, देख के लग ही नहीं रहा कि वो बिल्कुल भी अलाउ करने वाले हैं ईस्ट बंगाल एफसी को और अक्षत को कि इधर से कोई भी चांस उनको मिला। 57% पोजीशनिंग भी अपने पास रखते हुए देखने के लिए मिले हैं। हकीमी टुवर्ड्स रोनाल्डिन्हो, बॉल तो है बट अक्षत को बहुत सोच के खेलना होगा। बट लाइक ये क्या पास था, आई थिंक बहुत मिस पास होता हुआ और इधर एक गोल हो सकता था, but Donnarumma by anyhow इधर बचाते हुए दिखे। रोनाल्डिन्हो with the finish, and एक बार फिर से बाहर पोस्ट लगा।
क्या हो रहा है आज इस बंगाल एफसी? प्रेशर पे ही नहीं, प्रेशर उनके ऊपर, और ये कंटिन्यू होगा। सीजे, ओह नो, टैकल, ये भी एक येलो कार्ड आ सकता है, क्या आएगा? नहीं दिया। ओके, सो कोई भी कार्ड इधर नहीं दिया गया है, बट फिर भी रनिंग थे और बहुत ही ज्यादा एक हार्श टैकल उनकी तरफ से आता हुआ दिखा था, लेकिन बीचों बीच से पास निकलेगा टुवर्ड्स रोनाल्डिनियो, बट मौजूद थे वर्जिल वैन डाइक। सीजे का जिस तरीके से अटैक है उतना ही स्ट्रॉन्ग इधर उनका डिफेंस भी है, और उसका बार बार प्रदर्शन देखने के लिए मिला है। वैसे उतना ज्यादा नहीं जितना इधर डिफेंस करना पड़ा है ईस्ट बंगाल एफसी को, बट फिर भी बेंगलुरु एफसी के ऊपर जब अटैक बन रहा था उस टाइम पे काफी शानदार तरीके से डिफेंड किए। बट फिक्सर्स इधर जिस जगह पे लाइक 57 एंड 43 पोजीशनिंग और जिस तरीके से इधर प्रेशर बना के रखे हैं सीजे, आपको लगता है क्या इधर से अक्षत कमबैक कर सकते हैं? I mean, looks very difficult. I don't think CJ has come with any intent to even concede a single goal, because so far it kind of feels like the first day you get to see CJ play, right? Where he kept a massive titan like Saranj, you know, from even taking a single shot at goal, where he just constantly kept on scoring, and this time also the same case, a beautiful cross being delivered, and CJ is just enjoying himself over here. From now onwards for Akshat, it's all about just trying to score one consolation goal, right? Because the first half already ended and the second half has begun, and Akshat is yet to take a single shot, not even on goal, single shot, and he has been restricted, chained. Does he break the chains? That would be a victory in itself, because not a lot of players have lived to say that tale, right? They have gone against CJ and they have managed to score a few goals. थर्ड गोल ऑलरेडी आ गया, और इधर ये जो गोल स्कोरिंग है, जो नंबर्स है वो अभी इंक्रीज होता जा रहा है, तो इस पे तो आई डोंट थिंक कि कोई भी दोहराए है कि सीजे इधर से इस गेम को निकाल के लेके जाने के लिए। सीजे, यस सीजे, वो नंबर्स बढ़ता जाएगा। चौथा गोल आ चुका है, बट अक्षत आज नाखुश, क्योंकि अक्षत सीजे के खिलाफ खेल रहे हैं और सीजे को हराने के बारे में सोचते सब लोग हैं, बट कर पाते हैं कुछ ही लोग, और वो कुछ लोग कभी कभार कर पाते हैं। वो सीजे इतना टफ प्लेयर है जिनको हराना, बट या 4 गोल ऑलरेडी आ चुका है। डिफेंस इतना खास काम कर नहीं पा रहा अक्षत की तरफ से, और अक्षत के डिफेंस को जस्ट इधर तोड़ मरोड़ के साइड पे रख दे रहे हैं चरणजोत का अटैक, क्योंकि बार बार देख पा रहे हैं कि स्ट्रक्चर तो मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन बीच से वो जो थ्रू बॉल्स, लॉफ्टेड नहीं, ग्राउंडेड थ्रू बॉल्स, एंड वो ग्राउंडेड थ्रू बॉल्स इतने शानदार तरीके से प्लेस इन हो रहे हैं डिफेंडर्स के बीच में से, वो लाजवाब हो रहा है, और उसके बाद कोई ऑप्शन ही नहीं रह रहा कि उधर जाके डिफेंड भी करे। तो यह चौथा गोल आ चुका है, मुझे तो लगता है शायद एक और गोल आता हुआ दिख जाएगा बहुत जल्दी, बट अभी के लिए काउंटर पे ईस्ट बंगाल से अक्षत, बहुत अच्छा मौका है अक्षत के पास, और वो गोल स्कोर करेंगे। पहला गोल फ्रॉम साइड ऑफ ईस्ट बंगाल एफसी, और ये जरूरी था, एक गोल तो आना बनता। Yeah, I mean, at this point, you know, CJ kind of got a little complacent. He felt like kind of undermined his competition, and this is where I think Akshat goes on to strike back. And from here onwards, you know, Akshat has to take that little glimmer of hope, right? And just wants to get back into the game. Of course, the 3-goal lead is still there in this game, but CJ at this point, you know, he would be looking to score 8 tonight. And there he goes. That finesse shot just comes in, and Akshat just lets out on his laughter. Oh, there you see. Look at the curl. Look at the curl of that. Clearly one of the goals of the week, and CJ already has scored 5 goals. And considering how the day started for CJ, well, if you look at where he was initially, the way he is right now, he scored 29 goals already, and a few more goals remaining. I think from what I had equated, or what I had calculated, was I think if he scores 8 goals tonight, then he's going to become one of those players who shares the top of the table in terms of the highest goal scorers
in the eISL Season 2's league stage, and we get to share that spot along with Crusher and Vishal. So if he scores 9, then he becomes the leader. So that's the sweet spot. That's where he's accustomed to be, as he takes another shot. But this time, it has been saved. But hold on. Our misery sort of continues, doesn't it? Because CJ was starting to get into the mood. He was in the groove. He was feeling it. We were witnessing so many of those goals, and unfortunately, we're not gonna see any more of that. That's a little bit disheartening. But I think one thing was certainly set in stone this time. I mean, we're not at that impasse where we were kind of wondering who goes on to be the winner. This was not a game where either of the sides could have won. This has been heavily favored by Bengaluru FC so far, which comes sort of gets me down to the discussion. Now, I'm gonna keep that TT commentator aside. I'm gonna just call out the fan, that East Bengal FC fan inside of you, and ask, was this the right choice to have Akshat, a less experienced player, go up against a player like CJ, or had they gotten Beno 7 in, things could have been better? देखिए, मुझे लगता है जिस तरीके से अभी तक का सिनेरियो रहा है, अक्षत ही वो प्लेयर है जो कि कुछ हटके किया है अभी तक। अगर देखा जाए तो कुछ हटके अगर परफॉर्मेंस देने की बातें हैं तो वो अक्षत की तरफ से आया है। और पिछले दिन जिस तरीके से उन्होंने वी शर्मा को परेशान किया था, उसके बाद मुझे लगता है इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइक दैट्स ओके। लाइक कोई भी किसी के खिलाफ जाए, आज के दिन पे शायद रिजल्ट चेंज करना आसान नहीं था। और बेंगलुरु एफसी ऑपोजिट और सीजे है तो लाइक आप कह ही सकते हो सिर्फ 2 प्लेयर के बीच में, तो इधर अगर ऑप्शन रहेगा तो वो तो कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सीजे पूरे साउथ एशिया के अंदर लाइक वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है। तो उनके सामने कौन आके कब परफॉर्म करेगा, वो तो सिर्फ इससे डिसाइड होता है कि सीजे कौन से दिन जो है उतना खास खेल नहीं पाएंगे। क्योंकि सीजे को इंडिया के जो बेस्ट प्लेयर्स हैं वो भी जब सीजे के सामने आते हैं, फिर भी कभी कभार जो है वो हरा पाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो है वो बार बार जा रहे हैं हरा रहे, लेकिन वो चीज सीजे कंटिन्यूअसली करते हैं। अगर मैच होता है 5 तो सीजे कभी कभार 4 जीत जाते हैं और ओपोनेंट के पास 1 जाता है। तो वो चीज हम लोगों ने देखा है, वो कंटिन्यूअसली, नॉट ओनली एआईएसएल सीजन 2 में बहुत सारे टूर्नामेंट्स में देखा है, यही चलता है। सब लोग शायद टूर्नामेंट पे जाने से पहले ही समझ लेते हैं सीजे है, क्या हम जा पाएंगे आगे। तो ये एक सिनेरियो। तो हाँ, इधर मुझे लगता है कि अक्षत जा रहे हैं तो वो एकदम प्रॉपर है। आई डोंट थिंक कि उसमें कोई इशू था, बट कह ही गए सीजे के खिलाफ कुछ कह ही नहीं सकते। लेकिन उनके खिलाफ आप जो भी स्टैट्स बनाओ वो ही फेल हो जाता है। Yeah, I mean, and at this point also you kind of tend to wonder if CJ is even trying to go a little ratty, just sweat himself out, right? And yeah, like you said, I mean, there has been substantial improvement from the side of Akshat. Last night's matchup against FC Goa, it was a very narrow scoreline lead for Visharma, right? It was a 5-4. And in that moment you start to believe, because Akshat, let's be honest, he's been one of those titan slayers, right? In terms of this matchup, which you could say it's a David versus Goliath showdown, right? You would ideally expect Bengaluru FC to only win. But if Akshat could have performed any sort of miracles, then you never know, right? Things could have been either ways. And on the other side, now that I kind of started introspecting a little bit. This could be where they were thinking in this manner that hey, listen, even if Akshat loses to CJ, we still got our co-op game, and we still have that third game where Beno 7 would want to have the best chances to win against Shagnik. Now 2 Bengalis and 2 players who love this sport, right from normal football to coming into FIFA. If they are going up against each other, I think this is something where it gets a little personal, right? क्योंकि 2 बंगालियों को अगर आप भिड़ा देते हो और उनको बोलते हो कि फीफा या फुटबॉल खेलो, तो वो अंदर का लायनल मेसी, वो अंदर का रोनाल्डो सब जग के आ जाता है और कुछ भी नहीं छोड़ते पीछे। तो दैट इज तो गोइंग टू बी द अल्टीमेट शोडाउन। बट so far I think in the next couple of minutes we're gonna have our results in front of us. But yes, I think this matchup was pretty one-sided, where we even felt like Akshat scoring 1 against CJ also would be a big feat, which he eventually did on that counter attack. बट देखिए, जिस जगह से
लाइक जिस जगह पे वो गेम पहुंच गया था उधर से आई डोंट थिंक कि कोई भी कमबैक आएगा अक्षत की तरफ से। ये बहुत लाइक अनथिंकेबल है काइंड ऑफ, हम लोग कह सकते हैं। लाइक हाँ, हो जाता है कभी कभार, लेकिन वो सीजे के खिलाफ शायद नहीं होगा। बट चलिए, इतने सारे डिस्कशन के बाद फाइनली हम लोग को पता चलने वाला है कि क्या है वो स्कोर लाइन। तो सीजे ने गोल मारा है और 6-1 का स्कोर लाइन रहा और सीजे एक तरफा कर चुके हैं उस पूरे सिचुएशन को। तो कहने की एक जगह पे तो क्लियर कर चुके हैं कि अगर नेक्स्ट गेम बाय एनी हाउ निकाले हैं बेंगलुरु एफसी, जो कि शायद ज्यादातर चांसेस वही है कि वो इधर से जीत जाए। अगर वो निकाल लेते हैं देन उनके पास और 3 पॉइंट्स चला जाएगा। लेकिन ये चीज को नजर रखते हुए पिछले दिन जो कल वन ऑफ द बेस्ट कोऑप टीम्स इन द eISL सीजन 2 उनको ड्रॉ कराए थे, फिर भी एक छोटा सा होप कहीं ना कहीं रहता है। And well, just lingering, just holding on to that hope, they would be going into the co-op matchup, and that is going to be oh so difficult because it's going to be Shagnik and CJ right now. Double dhamaka जब आप बोलते हो वो होने वाला है थोड़ी देर. But getting the conversation back into what really was happening, it was pretty straightforward. CJ was just piercing through, breaching through the defense, and there was not even a single instance I felt like Akshat was in control of the game, where right from the get-go we saw Akshat trying to fight for the ball a lot, and he was going for those early charge tackles, but that was all a ruse from CJ's side. He kind of read him like an open book and made him dance to his grooves. And as a result, a 6-1 scoreline. But is CJ going to be happy? Because to kind of get himself to be one of the top goal scorers, he had to score 8 goals, and he failed to do that. So, of course, CJ, you have won the game, but I'll take that as a defeat because CJ should have scored those extra 2 and should have maybe just kind of sweat it out. But yeah, don't scoff at me for that. But regardless, just heading off into the co-op game. Yes, that was the last individual matchup that we got to see Akshat playing in, and hopefully we get to see him continue his run in the eISL. Another returning player, and previously he used to play for Kerala Blasters FC. This time representing East Bengal FC, and did whatever he could have. देखते हैं अभी के लिए। देखिए, मेरा जो फैन है अंदर का बाहर निकल के आ रहा है और चीख चीख के बोल रहा है प्लीज जीत जाओ, लेकिन एक जगह पे जाके ना कहने के आपका जो है दिमाग कहता है कि ये मुश्किल है, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो सीजे एंड शाग्निक मेनली उनका हो सकता है कि कभी कभार प्रॉब्लम्स हुए हो, लेकिन ज्यादातर टाइम उन्होंने काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म किया। एंड स्पेशली शाग्निक बीच में थोड़ा सा हल्का फुल्का फॉर्म उनका गायब हो गया था, बट फिर से वो वापस आता हुआ दिखा है। और वो जब से वापस आया तब से बेंगलुरु एफसी के जो मिडफील्ड है स्पेशली ऑन कोऑप वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। सो पहले तो मिडफील्ड को बीट करना होगा, डिफेंस तो उसके बाद आएगा। तो मिडफील्ड को बीट करके जाएंगे, देन डिफेंस बहुत सारा काम है। सीजे फिनिशिंग के मास्टर है, और उसी के साथ साथ अगर देखा जाए ऐसे सिचुएशंस में आके जिधर जस्ट प्लेऑफ के पहले खेल रहे हैं इधर साग्निक भी नहीं चाहेंगे कि वो इधर से कोई भी मैच ड्रॉप करे या फिर हारे। तो वो भी अपने एकदम टॉप नॉच फॉर्म में खेलेंगे, और वो ऑलरेडी बहुत सारे लेन खेल चुके हैं, तो एक्सपीरियंस प्लेऑफ्स के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा है ही है। और उसी के साथ उसके पहले प्लेऑफ्स पे जाने से पहले का जो सिनेरियो है वो भी वो बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं। प्रिपरेशन कैसे लेते हैं वो भी उनको पता है। उसी के साथ बात करते ही करते हो चुका है शुरू कोऑप गेम। पिछला जो मैच था उस पे तो हो गया था काम तमाम, 6 गोल कंसीड कर लिए थे ईस्ट बंगाल एफसी, बट इस बार है वो रिवेंज लेने का टाइम। क्या वो ले पाएंगे या फिर नहीं, वो देखना होगा। लेफ्ट टू राइट इधर खेलते हुए दिखेंगे ईस्ट बंगाल एफसी, राइट टू लेफ्ट बेंगलुरु एफसी। Alright, so it's kickoff, and Bengaluru FC, like you said, they would be looking forward to absolutely go on to thrash East Bengal FC over here. But especially considering the fact that Beno 7 has also come in, so he carries that little bit of the experience. Now, even if you talk about Beno 7's backstory, right? He was initially a pro player, and then he decided to quit FIFA.
And then in that first season of EISL, he came back, and from his retirement coming back, and he was kind of a little bit nervous as to what's going on, what's going to happen. And Ankit Gupta, his brother in arms, had really head him out, but all right. So just when maybe CJ thought that he's going to score that one, did not happen. And then, from that nervous boy from Kolkata to, being one of those crucial players in the EISL that went on to win games coming into season 2 with such brimming confidence, and then witnessing a fall. He's had a hell of a storyline going on with him, and had been, and in fact is still East Bengal FC's hero for what he has achieved last season. This season did not go the way he had planned. He's taken that dent, but it's all right. We know he's a fighter. He is a warrior. He is gonna come back next time, and I'm sure he's gonna reinstate that lost faith in all the fans that he has. ये एक और अटैक कहीं ना कहीं बनता हुआ दिख रहा है बेंगलुरु की तरफ से। बहुत ये थे, फाइनली गोल छीना गया। बट देखिए बेंगलुरु कांस्टेंट एक प्रेशर वो बिल्ड करके रखे हैं, और इसी वजह से ईस्ट बंगाल एफसी को इतना खास मौका अभी के लिए तो नहीं मिल रहा कि वो इधर खुल के खेले। और जिस तरीके का फॉर्मेशन अभी मेंटेन हो रहा है, उस फॉर्मेशन के हिसाब से बहुत ऑन पॉइंट रहना होगा अपने पासिस के साथ ईस्ट बंगाल एफसी को। रुडलीत टुवर्ड्स रोनाल्डिनियो, राइट हैंड साइड से देखिए हकीमी ऑलरेडी आ चुके थे। रोनाल्डिनियो इधर कहने के फिर से हम लोग को सिनेरियोस जो है वो फिक्स होता हुआ दिखेगा, और कभी कभार हो जाता है ऐसे सिचुएशंस, क्योंकि देखिए कुछ कुछ चीज़ें जो है वो हमारे हाथों में नहीं रहता, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो किस तरीके से कब काम करेंगे और क्या वो आपके साथ देंगे भी कि नहीं वो भी पता नहीं रहता। वो चाहे वारंटी जो भी आप कह लो, अगर उनका जाला होता है वो चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ आपका आ जाता है उस जगह। Yeah, even I was taken aback. I was just sitting and chilling, and suddenly I see, oh, match forfeited. And it's all right. We have seen that happen. I'm pretty sure, considering these are the early phases of the game, it is going to be restarted. And since Bengaluru FC have been looking so attacking, I'm pretty sure East Bengal FC, they've got this little bit of a pause where they can start contemplating, where they could figure out some other strategies, where they could figure out some other avenues to get back at them. And it kind of was, again, looking one-sided, if I have to be brutally honest. And this is one of those outcomes that you would predict, right? And at this moment, I'm kind of starting to ponder, what could East Bengal FC do to sort of score against Bengaluru FC and go on to even win this matchup? Is there any way? कोई वो जड़ी बूटी है, या फिर कोई भी वो अमृत का रस मिल सकता है क्या इन्हें कि कुछ ना कुछ ऐसे कर दे? बट ऐसा अभी तक प्रतीत नहीं हुआ है। एंड सो फार this matchup has been looking pretty one-sided, and it's just what storyline do we have from here? Is it that can East Bengal FC just give us a surprise, right? That's what we're going to be hoping on a long shot. Now, since I have already called out the fan out of UTT, you have to tell me, what do they need to do over here? क्या करना चाहिए? आप खुद भी फीफा खेलते हो, आपको क्या लगता है कि क्या अलग करें तो शायद से हरा पाए बेंगलुरु एफसी को? देखिए जितना मैंने अभी देखा है और जितना मैंने समझा है, एक चीज़ तो पता चल चुका है कि मैं जितना भी फीफा खेल लूँ इनके लेवल पे तो मैं पहुंच नहीं सकता, फर्स्ट ऑफ ऑल। और उसके साथ साथ बट हाँ, टैक्टिकली अगर बात किया जाए थोड़ा बहुत चेंजेस जो है वो कर सकते हैं मे बी, जो कि उनके लिए काम आ जाए। एक है कि इधर पहली बात तो थोड़ा पासिंग के ऊपर ध्यान दें और उनका फॉर्मेशन चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि देखिए हमेशा आप सेम फॉर्मेशन के साथ खेलेंगे जो कि आपको नॉर्मली एडवांटेज देता है, वो ऐसा मतलब नहीं है कि आपको उसके साथ ही खेलना होगा। जब आपके ओपोनेंट पे कोई इतना स्ट्रॉन्ग टीम आ रहा है जो कि ऑलरेडी लाइक कहीं ना कहीं डोमिनेट करते आ रहे हो बाकी क्लब्स के ऊपर इन टर्म्स ऑफ गोल्स,
उस टाइम पे आपको थोड़ा बहुत चेंज करना चाहिए फॉर्मेशन। मे बी वो 4-2-4 पे ही अभी भी चल रहे थे ईस्ट बंगाल एफसी, बट उस जगह पे चेंज करके शायद 4-4-2 कर सकते हैं। मिडफील्ड पे थोड़ा प्लेयर्स इंक्रीज कर सकते हैं, जिसके थ्रू डिफेंस जब उनको करना होगा उस टाइम पे उनके पास एक्स्ट्रा प्लेयर्स रहेंगे, तो उतना ईजी नहीं होगा। तो ये कुछ चीज़ें जो है वो हो सकता है, बट हाँ, एज अ प्रो प्लेयर आप चाहते हो कि आप कंटिन्यूअसली compete करो ओपोनेंट के साथ सेम जगह पे, सेम लेवल पे, तो उस जगह पे ऑब्वियसली 4-2-4 का ही इस्तेमाल होगा, क्योंकि आपको अगर गोल स्कोर करना है तो आपको 4 प्लेयर्स जो है वो चाहिए होते हैं एटलीस्ट प्रो लेवल पे, क्योंकि आपको पासिंग करना होता है। मैं तो कहाँ खेलता हूँ डिवीजन 5 पे, अभी हाल लाइक आज ही जस्ट मैं 4 पे आया और आज ही सीजन खत्म हो रहा है, तो फिर से पीछे चला जाऊंगा, फिर से आऊंगा खींच के। तो वही बात है, लाइक इधर यही होता है। तो फॉर्मेशन अगर आपको डिफेंसिव खेलना है थोड़ा बहुत और आपको काउंटर पे गोल करना है और आपको पता है कि ओपोनेंट का अटैक बहुत अच्छा है, तो मे बी ये फॉर्मेशन का काम हो सकता है। और सिर्फ यही नहीं, मैंने सागनी के साथ भी कुछ दिन पहले बात किया था, उन्होंने भी कहा था कि उनको सबसे ज्यादा पसंद है, लाइक जितना मुझे याद आ रहा है 4-3-3 कभी कभार खेल लेते हैं, बट उसको छोड़ के अगर वो टूर्नामेंट पे खेलने की बात हो तो वो 4-4 भी कभी कभार खेलते हैं। और उसके साथ साथ वो ज्यादातर प्रेफर करते हैं कि उनके पास डबल स्ट्राइकर है, लाइक 2 स्ट्राइकर के साथ वो एटलीस्ट जाए, ताकि वो जो आखिरी मोमेंट पे जो पासेस हैं वो खेलने में उनको मदद हो, लाइक एक एक्स्ट्रा पास खेलने के लिए उनको प्लेयर मिले। तो ये चीज देखा है। तो अगर एंड एक चीज तो देखने के लिए मिला है कि जो जितने भी क्लब्स हैं वो सिमिलर से ही फॉर्मेशन के साथ आते हैं। तो अगर आप स्टडी करते हो ओपोनेंट को तो आप उनके फॉर्मेशन को देख सकते हो, जैसे कि ये एक ओरिजिनल फुटबॉल जैसा ही है। अगर आप फीफा खेलने जा रहे हो, कोई 5 डिफेंडर के साथ आ रहा है, तो आपको काउंटर करने के लिए उधर अटैकर्स इंक्रीज कर दो, या फिर आप खुद भी विंग बैक्स के साथ जाओ जो कि आपको अटैक पे जाके ओवरलैप करते हुए दिखे। तो एक्स्ट्रा प्लेयर्स इंक्रीज करो, जो कि हम लोग देखते हैं यूजुअली लाइक फुटबॉल के ऊपर। तो ये टैक्टिक्स है, ये देखने के लिए मिलता है। लेकिन वही होता है ना कि कोई मेसी रोनाल्डो निकल जाते हैं, तो उनके सामने क्या ही करेंगे। And we literally have Messi and Ronaldo. But just taking information from what you just said and articulating my own thoughts there. So I kind of feel like first they need not be intimidated, because whenever you're going against Bengaluru FC, you kind of have that lingering thought at the back of your head, right? There's CJ and Sharknik that we're going up against, and both of them are veterans in the scene, right? Sharknik, we've seen, he's in the scene for quite a long time, and CJ, of course, his name speaks for himself. And this is where you need to treat it just like another game. First, that's where you need to win the mental battle. Then, secondly, you cannot just give in or get intimidated or submit to the opposition style of play. You need to be fast, you need to be agile, you need to be quick in your thoughts, because I felt playing FIFA so much, it's those one little mistakes that is what is the difference maker between you scoring and conceding a goal, right? That one extra step, that one extra pass, that one early charge tackle, that one move that you have made that creates all that difference in that final third. So you have to be kind of taking that moment to understand what your opponent is trying to do. There is going to be a pattern, be it CJ, be it even Tex, who's one of the world's best player, quite popular also. So they also have a style of play, and then you need to understand what they're trying to do, what their how their routines are. So you need to watch a lot of their games and figure out a game plan in mind. And in doing that, you might find some solution. But yes, of course, we are trying to get the match start off again. But before we have it for you guys, let's take a look at some amazing content that we have created over the past weeks.
pacing through that right wing. And is so calm on his build-up, right? Wow! Can do things like this. Look at that! लेकिन Van der Sar, my God! ये तो कर चुके हैं, but खतरा नहीं टला. Bellingham! What a shot! Cannot just settle with a draw. Cannot fight for only 1 point. They need all the three. And this time, good chain of passes with Mbappe. Have a 9 to go for another pass. On to have your majority of your attackers playing back a little bit, going for the defense, but with Lionel Messi. Oh, it was a little bit of a scrappy play. What to take? And if he nets it at this point, then it's pretty much done, dusted. But a beautiful pass onto it, Pele. He's got to show that patience, and he does. He's done that. Alright, we are quickly back, and we've made everything is a-okay. We are ready to get this match started again. So yeah, not much was happening, and yeah, TT, you expressed your concern as a fan and what needed to be done, and even me being a neutral spectator, because we're literally sailing in the same boat, right? Your home club, East Bengal FC, could not make it through. Same went with ATK Mohan Bagan. Even there was a phase. No, I won't say that on camera. I am pretty sure what's going to happen to you. But yes, for me, even the juggernauts could not make it. So we're just going to be watching even the playoffs unfold because of our love for this sport. And that being said, we're off with the game once again. East Bengal FC versus Bengaluru FC, where East Bengal FC, they go from left to right, and Bengaluru FC from right to left. ये एक बार फिर से कहने की शुरू हुआ है और इस जगह पे क्या कुछ मौका मिल सकता है. Oh my God! ये कुछ अलग ही हो जाता, ये कुछ मैजिकल हो जाता. गलती से भी हुआ होता तो भी हो जाता, और कुछ भी आए चलेगा. अभी के लिए एटलीस्ट इस बंगाल एफसी के लिए गोल आना चाहिए, और वो कोई भी आए तो चल जाएगा उनके लिए. और देखिए इधर जिस तरीके से शुरू हुआ है अटैक के साथ, बहुत बहुत ज्यादा लाजवाब. और एक बार फिर से काउंटर पे बेंगलुरु एफसी विद गोल, एंड उसी के साथ लीड ले चुके हैं. अगर यही स्कोर लाइन रखे, जो कि अभी से कहना तो बहुत टफ है, मुझे लग रहा है स्कोर लाइन तो चेंज होगा. वो हो सकता है बेंगलुरु की तरफ से भी और ईस्ट बंगाल की तरफ से भी, बट अगर जीत के खत्म करे तो 3 पॉइंट फॉर श्योर इधर से लेके जाने वाले. Oh yeah, and this is quite a typical fashion where we felt like yes, East Bengal FC, they were looking a little less intimidated, where it was such a nice shot on goal, right? And the crossbar has been a curse for so many of these clubs, and again for East Bengal FC, such had been the case. And just before they could recover from that trauma of not being able to score a golden chance, missing that, they concede one, and that we've seen happen a lot in the eISL this season. And one of the biggest receivers of that has been Lokman. Every single time you see, Rick, if you remember, Lokman, no matter if he creates a chance, if he scores a goal, right after he concedes one, that is like written in the stars that will happen. And I think that is one of those areas where Lokman has to put in work, and if he does that, of course, Kerala Blasters FC, they've been in a very beautiful run, considering, at one point they were at the very bottom of the table. To go on from there to make it to the playoffs, it is a Cinderella story, especially considering the kind of a team that they had. But as we keep on speaking, beautiful chain of passes, very articulated, nice composed goal. Bengaluru FC, just like that, 2-0. 2-0 के साथ बेंगलुरु एफसी अभी के लिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अपने लिए बना चुके हैं. एकदम स्टार्टिंग में जो अटैक बना था उधर बार पोस्ट पे लग के डिफ्लेक्ट हुआ, और उसके बाद से जो डिफ्लेक्शन आया वो डिफ्लेक्शन जाके खत्म हुआ ईस्ट बंगाल एफसी के खुद के नेट्स पे. और अभी के लिए 2 गोल्स ऑलरेडी आ चुका है. बट इस बार क्या ये पहला होगा? नहीं, लूशियो उधर मौजूद थे, काफी बेहतरीन तरीके से शील्ड करते हुए दिखे. काउंटर पे जाने की कोशिश बेंगलुरु एफसी की तरफ से. बेंगलुरु एफसी बहुत ही जल्दी ट्रांजिशन कर चुके हैं.
विथ एम्बापे। कोशिश था कि रोनाल्डिनियो को इधर क्रॉस करके निकल जाए, लेकिन वो हुआ नहीं और एक फाउल किया गया था एम्बापे के ऊपर। तो एक शॉर्ट फ्री किक मोस्टली, या एक शॉर्ट फ्री किक के साथ ही जाएंगे। 25 मिनट का गेम ही हुआ है सिर्फ, और 2 गोल्स ऑलरेडी आ भी चुके हैं। तीसरे के लिए आगे बढ़ते हुए लियोनेल मेसी पूरे लाइन के ऊपर बॉल रोल कर रहे थे, और उस जगह से अभी भी हालांकि कंट्रोल पे तो था, बट जस्ट इस बंगाल एफसी की तरफ से छीना गया। Yeah, I think at this point is Bengaluru FC kind of sort of toying around with East Bengal FC right now. The way they're keeping that possession, this is kind of the remnants of the first game that we had. Again, a similar routine. This time, however, East Bengal FC did not surrender, did not succumb, responded back. That vital tackle coming in, and now they get to break out for a counter-attack with Jairzinho at left wing, with R9 passing it on towards Bellingham. Have to take that shot, but Rude Hullet comes in and intercepts it away. But still, the attack resumes with R9, not the best of spot that he has. Still has a few passing options, but the opportunity again squandered. ये हाफ बेंगलुरु एफसी के लिए अभी तक तो बहुत सारा सक्सेसफुल रहा है, और उसको और सक्सेसफुल बनाने के लिए एक और अटैक पे आ गए थे। बट देखिए, आखिरी 9 मिनट बाकी है इस हाफ के, और जिस तरीके से बेंगलुरु एफसी खेल रहे हैं, बिल्कुल भी मौका नहीं दिया जा रहा इस बंगाल एफसी को। बट बहुत शानदार 1-2 रोनाल्डिनियो और राइट विंग, पास करने की कोशिश था हकीमी को, लेकिन वो हुआ नहीं। बॉल आया भी, बट रोनाल्डो के ऊपर तब तक कंट्रोल गया नहीं, जिसकी वजह से एक अच्छा मौका जो है वो हाथ से निकलता हुआ देखा। नहीं तो जिस जगह पे बॉल गिरा था उधर से इस बंगाल एफसी के प्लेयर ज़्यादा दूर नहीं थे, वो ले सकते थे। बट हो जाता है कभी कभार, कंट्रोल उस प्लेयर के ऊपर जाने में भी टाइम लगता है। बट थियो हर्नांडेज, देखिए हाई प्रेसिंग गेम खेला जा रहा है, सिर्फ इसी पे ही नहीं, इसके पहले चरणजोत जब खेल रहे थे तब भी वो हाई प्रेसिंग गेम खेल रहे थे। तो आज बिल्कुल भी कोई सेकंड थॉट्स नहीं है, वो फुल्ली एग्रेसिव जाएंगे। बट इस बार बहुत अच्छा मौका, फिनिश करना चाहिए ये। नो, ये भी इधर एक गलत पास, वैसे रोनाल्डिनियो के साथ भी ट्राई कर सकते थे। No, I kind of felt like instead of going out, had he gotten in, then that could have been a goal, right? Because when he went out, then he kind of reduced his nice angles of scoring, and that sort of went against East Bengal FC. Because even after the end of the first half, it's just a 2-goal lead that Bengaluru FC have over them, which is in the FIFA realms not that much. And it's not like, they have just given up, right? East Bengal FC, they're definitely fighting back. In fact, look at that. They've taken 3 shots this time also. So much better performance from their side, especially with how the match had begun. So kind of thoughts into thinking that maybe we could see some goals coming in from East Bengal FC in the second half. Because even if you look, if you kind of dig into the past and how they've performed, East Bengal FC are sort of those late bloomers, right? They kind of get into the game, maybe concede some early goals, and then in the second half, suddenly work on their mistakes and come back right in, striking back. So if they could kind of hold themselves off against FC Goa yesterday, right? It was a 3-all scoreline. So against Bengaluru FC, I kind of like their odds. At least try, to try and get a draw from this one. बेंगलुरु एफसी जिस तरीके से फर्स्ट हाफ खत्म किए थे, उसके बाद वो चाहेंगे कि इस गोल्स के नंबर को और इंक्रीज करें। बट हाँ, ईस्ट बंगाल एफसी की अगर बात किया जाए, ईस्ट बंगाल एफसी की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव अप्रोच देखने के लिए मिला है अभी तक, लेकिन गोल्स अभी तक नहीं आ पाया। सो उनको गोल्स की ज़रूरत है अभी बहुत ज़्यादा। व्हाट वाज दैट? टागलिक थे ये मोस्टली, और ये क्या था? कौन सा गोलकीपर ये पकड़ पाते? शायद कोई नहीं। 3-0
And you know, TT, I don't know if it's Shagnik or CJ because just in the previous match, I remember vividly that CJ had scored a similar goal from the same spot. And now this has to be a goal. This has to go in. Yes, it does. East Bengal FC quickly find their way back into the game. Still that 2-goal lead exists. But yeah, a little bit of a sucker punch for Bengaluru FC. Clearly not prepared. They were kind of in awe of that goal they scored. And this is something that you would see from Rudhulit, from players like CJ, and even Shagnik does have you know, the potential of scoring one more. But oh, it was a nice chance. Again, I think there's that little bit of an overthinking that is coming into play for East Bengal FC. That's kind of keeping them at bay. But with R9 just trying to beat through the defense physically. But no, East Bengal FC did not let that happen. पहला गोल तो आ चुका है इस बंगाल की तरफ से, अभी बाकी के दो कब आएंगे और आएंगे भी कि नहीं वो अभी देखना बाकी है। 60 मिनट का टाइम ऑलरेडी हो चुका है और उसी बीच में एक और अटैक के लिए पहुंच चुके हैं, बट हकीमी इस बार तैयार थे और बेंगलुरु एफसी उनका जो कोऑर्डिनेशन है वो भी काफी ठीक ठाक देखने के लिए मिलता हुआ, ऐसा नहीं कह सकते एकदम टॉप नॉच चल रहा है, बट फिर भी हाँ, इनका जो क्लिनिकलनेस है वो काफी अच्छा है। लाइक वो एकदम बात तो कर रहे थे लेकिन बीच से बॉल निकाले और हालैंड के लिए दूसरा गोल और इस बंगाल एफसी धीरे धीरे करके वापसी करने की कोशिश। कल के दिन पे स्कोर लाइन था 3-3 एफसी गोवा के खिलाफ। क्या वो आज भी इक्वलाइज कर पाएंगे? 3 गोल ऑलरेडी बेंगलुरु एफसी की तरफ से आ चुका है, बट लेफ्ट हैंड साइड से रोनाल्डो आते हुए एक काफी शानदार पोजीशन बना चुके हैं। रुडलीद बीचों बीच से टुवर्ड्स हकीमी बट ऊपर से निकल गया। Yeah, and I think that was not even green time. An outside footer attempt with that L2 and circle being pressed. But yeah, had he just tapped that circle again and it was green time just when the player's about to shoot. A lot of you people must be wondering what's a green time shot. So you gotta shoot on your, you gotta tap on your shoot button twice. And the second tap has to be just when the player is about to take that shot. If you do that, it's a green time shot. And it goes right, beating the keeper just like this one. It was not a green time shot. So it kind of has that extra power and that extra accuracy. And that is how you could score majority of those. And Bengaluru FC, they're not gonna let what happened with FC Goa happen to them. Right? They are gonna cruise through. As at the 70th minute marker, they net the 4th goal coming in. And at this point, you know, East Bengal FC, they are you know, trying to force their comeback. They have already scored 2 and looking for the 3rd basically. Wanted to go for a roulette, but no. Bengaluru FC just reading them through and stealing the possession away, which has been stolen again. So East Bengal FC, just when we could start thinking of the prospects of what they could have made out of that attack, the ball again changed sides. ये जो पॉज अभी लिया गया है इसमें फ्रेश लेग्स तो लेके आएंगे ही आएंगे, बट कौन कौन होंगे वो देखना होगा, और अगर आते भी हैं तो क्या फॉर्मेशन में चेंजेस होंगे? आई थिंक हो सकता है ईस्ट बंगाल एफसी की तरफ से थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं और मे बी वो ऑल आउट जाते हुए देखने के लिए मिल सकते हैं। हालांकि जब आपके पास 2 प्लेयर्स ऑलरेडी रहते हैं तो आप पीएपीएल के लिए उतना ज़्यादा जाते नहीं हो, क्योंकि आपके पास 2 प्लेयर्स ऑलरेडी है, तो पीएपीएल के लिए अगर आप जाओगे 2 प्लेयर भी आपका लाइक चार्ज करेगा, फिर उसके साथ और भी 2 प्लेयर चार्ज करेगा, फिर बहुत ज़्यादा खारी एरिया क्रिएट हो जाता है पूरे ग्राउंड के ऊपर। सो देखना होगा लाइक क्या टैक्टिकल चेंजेस देखने के लिए मिलता है, बट एज ऑफ नाउ जो फ्रेश लेग्स है हम लोग को क्या एज अ कैप्टिविया करते हुए दिखेंगे लेफ्ट बैक के ऊपर। बट शुरू में लाइक आते आते ही थियो हर्नांडेज को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है फिलहाल के लिए, क्योंकि आते ही उनको एक अटैक फेस करना पड़ रहा था, बट एज ऑफ नाउ बॉल जीतने में कामयाब रहे हैं बंगाल एफसी। और इसी जगह पे फिर से बॉल छिना गया बेंगलुरु की तरफ से, और इस बार काफी अच्छा मौका, खुला जगह, सीधा शॉट ले सकते हैं, लिए भी। व्हाट
ठीक है। Okay. Oh, even Akshat, we have Hashi 0-5. Okay, that is an interesting celebration going on over there. But yeah, I mean, if you talk about the sheer physicalness that Erling Haaland can show, that is the epitome of it, right? He took a shot, the keeper deflected it, and then he just rushes through, beating the keeper. But Mbappe could give in a sucker punch. Yes, he certainly does. As Bengal FC do manage to steal another one in. And 3-5 the scoreline, still 8 minutes remaining into the game. The big question is, will Bengaluru FC score another one? Oh, 5-3 यूसीबीओ बीच से निकल गए थे, लेकिन काफी अच्छा डिफेंडिंग। पर देखिए, ये गलती आप नहीं कर सकते इस जगह पे। पीछे बैक पास तो बिल्कुल नहीं करना था। पास करेंगे और उसी के साथ एम्बापे बिल्कुल भी 2 बार के लिए सोचेंगे भी नहीं फिनिश करने पे। 6-3 बेंगलुरु एफसी बैक टू बैक 2 गेम्स और दोनों में ही 6 गोल स्कोर करने में कामयाब रहे हैं। और उसी के साथ ये चीज तो अभी पक्का हो ही चुका है, वैसे तो बहुत पहले ही हो चुका था जब वो 5th गोल इधर दाग चुके थे उसी टाइम पे, कि ये 3 पॉइंट बेंगलुरु एफसी लेके जाने वाले हैं। और इस बंगाल एफसी के पास कोई भी पॉइंट नहीं आएगा। बट यस, आखिरी 2 मिनट, और ये 2 मिनट के बाद फाइनल विसल बजने जा रहा है। और इसके बाद जस्ट एक लास्ट गेम होगा जो कि बेनो 7 का आखिरी 90 मिनट होगा ये एसएल सीजन 2 के अंदर। Yeah, I mean, at this point, yeah, I think there was not even a place where we could think of those possibilities where East Bengal FC could have come back, because every single time East Bengal FC scored, then Bengaluru FC also retaliated or gave an answer back. And it was kind of came down to the fact that they kind of held on to a 2-goal lead every time, and eventually ended with a 3-goal lead, 6-3 being the final scoreline as the final whistle blows. And this amounts the end of East Bengal FC's co-op game. Right? They're finally just playing their final few moments, and that was the last of Akshat that we get to see in the eISL season 2. And quite a valiant effort is what we can say, going up against Titans, Bengaluru FC, and still managing to score 3. It's a commendable feat, right? But yeah, I think this game they kind of were a little poised, but sometimes Bengaluru FC, not just sometimes, every single time, even I felt like they were always a step ahead. जी हाँ, ये कहीं ना कहीं पूरा प्रॉपरली हम लोगों को नजर आ रहा था। बट कोऑप पे कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज परफॉर्म किए, गोल्स तो स्कोर हुआ बेंगलुरु एफसी की तरफ से, बट क्या वो रेडी है प्लेऑफ्स के लिए? क्योंकि प्लेऑफ्स में जो कोऑप क्लब्स हम लोगों को देखने के लिए मिले हैं, जिस लेवल पे जाके वो खेलते हैं, आई थिंक कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा डगमगाहट था। उनके कुछ पासेस जो है वो गलत जा रहे थे। हालांकि वो आज 6-3 से जीत चुके हैं, और शायद बहुत लोगों को लग रहा होगा, बट क्यों कह रहा हूँ मैं इसीलिए कह रहा हूँ, बेंगलुरु एफसी के लिए सिर्फ आज तक जो है वो सफर खत्म नहीं हुआ। इनका प्लेऑफ्स भी है, वो लैंड पे खेलने वाले हैं। और उधर कौन कौन भिड़ने वाले हैं उनके सामने? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, मुंबई सिटी एफसी, एफसी गोवा। तो ये जो क्लब्स हैं, ये क्लब्स तो अलग अलग लेवल पे जाके खेल रहे हैं कोऑप के ऊपर। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, मुझे लगा कि कोऑर्डिनेशन थोड़ा और बेटर हो सकता है, जो कि एक अच्छा खासा गैप मिल रहा है जिसके बीच में शायद वो फिक्स कर सकते हैं। I think this kind of has been raised by Tuchel, right? Where he said, yeah, of course, we're going to keep on carrying forward with the conversation as the scorecard is in front of us over here. So, yeah, 6-1, 6-3 pretty much means Bengaluru FC have sealed those 3 points and will be quite comfortable. I think they'll be holding on well to the third position, to the 4th position. So, yeah, that being kept aside. Now, Tuchel, I remember I had this conversation with him. He said that, what, fixes? Just wait and watch Bengaluru FC in the playoffs, right? Because it's going to be LAN. And this is where Shagnik and CJ really thrive. Because
CJ has to be one of the best players in land. And Shagnik along with him, that experience he carries forward, I think that is going to help Bengaluru FC. I kind of have this feeling that I don't know if I could just go out and call them as the champions, but I have this feeling that Bengaluru FC make it to the for grand finals also. So that is going to be also again that gets decided on the 6th and 7th of May, and I really hope the people watching this broadcast do not forget to miss. I mean, in fact, invite your friends over, have enjoy, get some beverages, get some nice food, because what you're gonna witness is again history in the making. Who is going to be the champion of season 2? Because if you talk about the competition level, I think we have surpassed season 1 for sure. Because with the type of players that we have gotten in, I mean, the players that we were sort of missing out on the previous season, and there were multiple reasons, one of which primarily being COVID. Right? And this time, since we do not have that scare, but we still urge you guys to stay safe, have your masks on, because the cases are also on the rise lately. But we've kind of grown up and accustomed to it. So this time, considering in the land, a lot of major faces were absent. You talk about CJ, one of the primary ones. Then Genocid wasn't there. We did not have Saki. We did not have Crusher. So since these players were kind of absent, it did not feel wholesome. Right? No, not taking anything away from the other players also we had. They were amazing, but these players being such an instrumental role in the FIFA community, you kind of expect them to be when you have the most premier competition happening in FIFA in India that time, and the prize pool was also massive last season. And heading in for to this season, of course, we are expecting that level of competition growing up, and that sort of brings us to literally the last game of eISL season 2 league stages, the final individual matchup, the last we get to see from Ben 07, and for what it's worth, we get to see an Edison Morris there. चलिए हो चुका है शुरू एक एंड का, जिधर 5 क्लब्स इधर कहीं ना कहीं अपना सफर खत्म कर देंगे और उसी के साथ साथ जो लीग स्टेज है वो भी इधर खत्म हो जाएगा। ईस्ट बंगाल एफसी आखिरी बार के लिए हम लोगों को दिख रहे हैं पिच के ऊपर, लाइक फीफा पिच के ऊपर ऑब्वियसली। ऑन द अदर हैंड अभी सागनिक है, तो दोनों ही बंगाल से ही बिलोंग करते हैं और दोनों को ही मैं जानता हूँ। लाइक क्या बातचीत हुआ है थोड़ा बहुत, तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ, तो जैसे कि आपने सही कहा था कि अगर एक दूसरे के खिलाफ भिड़ जाए तो वो बहुत दूर तक चले जाते हैं। तो देखते हैं। वैसे हालांकि इस पे अगर बेनो 7 जीतते भी है फिर भी सारा कुछ चेंज नहीं आएगा, पॉइंट्स तो इधर जाने ही वाले हैं बेंगलुरु एफसी के पास, बट फिर भी फॉर द लास्ट टाइम ये जो भिड़ंत है वो हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। सो लेट्स सी कौन निकाल के लेके जाते हैं। तो इधर देखिए एडरसन मॉरिस को बिठा के वैंडेसार को लेके आ चुके हैं सागनिक। And when you kind of have Edison Morris up, I think this is where even Dougal said, but hold on. Oh my God. That came out as an offside. So even if that had been a goal, wouldn't have still counted. But yeah, Dougal kind of specified that a lot of the players are going for those driven shots, and Edison Morris has some insane reflexes, as a result of which he comes. And again, I think in which you also bought a point maybe to get that extra game. So that could have also been one of those reasons. We had seen CJ doing that all along. Now his partner in crime, he's also up to his antics. So yeah, coming back, Shagnik wants to respond in fashion. A situation where we have seen Shagnik play the majority of eISL, right? They kind of tend to win the first 2 games, and Shagnik just plays for fun, where he's trying to toy around Ben 07, both the Bengali boys in action. Let's see what happens, because we can see those sparks, right? Ben 07 is not gonna just let Shagnik stomp over him. शुरुआत में जो वो अटैक आया था, हालांकि वो ऑफसाइड था, उससे एक चीज एक बार के लिए तो लगा शायद इधर ईस्ट बंगाल एफसी स्पेशली बेनो 7 कुछ सरप्राइजेस दे सकते हैं सागनिक को, क्योंकि जब मुझे अभी भी याद है मैं खुद एक लैंड खेलने गया था, अनफॉर्चुनेटली मैं इनके सामने आ गया गलती से, शायद इनको याद नहीं हुआ होगा, बट ये दोनों ही गए थे उधर भी।
और दोनों ही फाइनल भी खेल रहे थे, तो एक दूसरे के खिलाफ तो काफी ज्यादा खेल चुके हैं। अभी पेनल्टी मिल चुका है, ओ माय गॉड, बॉक्स के अंदर फाउल हुआ और मिला है पेनल्टी। क्या होगा? आई थिंक देखिए 90% टाइम तो गोल हो जाता है, बट प्रेशर ऑब्वियसली रहेगा इधर, और गोल हो चुका है लेफ्ट ऑफ कॉर्नर। साग्निक सोचे थे शायद सीधा आ जाए, इसकी वजह से वो हिले भी नहीं, लेकिन इधर लेफ्ट ऑफ कॉर्नर पे फिनिश किए। तो ईस्ट बंगाल एफसी पहले गोल के साथ शुरुआत करते हुए खाता खुले, बट साग्निक वी नो कि वो कभी भी कम बैक कर सकते हैं। Yeah, I think nice start for Beno 7. Quite unexpected for Shagnik to concede a goal via penalty. And Beno 7, Shantan in fact says, thank you so much, sir. And now he's en route to get a second one. And I think Beno 7, this would be really monumental if he kind of manages to end his eISL Season 2 campaign with a victory, right? We would want to see that. For Shagnik, he's got nothing to lose over here. They know they've got those 3 points secured. It's just those two boys from Bengal fighting it out against each other. The pure passion of the sport that they play. Athletes at the highest level, right? Trying their hands out at each other, and that was a nice chance in the making. Good set of passes done, but sadly nothing could really come out of it. And now from here onwards, Shagnik is on a build-up, and he's gonna take his sweet time. And wow, that's a beautiful through pass played towards Theo Hernandez. And from here onwards, where does he go? Still searching for options. As you can see, Beno 7 is being quite proactive, but that little bit of a misplay defensively could cost him a lot. Let's step over on KDB, goes in, takes that shot, and just like that, Bengaluru FC strike back in. विद दैट इक्वलाइजर इधर दाग चुके हैं, और कहीं ना कहीं स्टेज फिर से सेम जगह पे बन चुका है। कुछ देर पहले गोल आया था ईस्ट बंगाल एफसी की तरफ से, जो कि पेनल्टी से था, बट ये गोल क्लियर बिल्डअप से देखने के लिए मिला। शाग्निक वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाले, बट पासिंग गेम राइट विंग के ऊपर बहुत दिखा है, एक बहुत ज़्यादा हम लोगों को देखने के लिए मिला है बेनो 7 की तरफ से। लेफ्ट विंग को भी उसी तरीके से एक्टिव करना होगा, अगर कर देंगे डबल साइडेड अटैक बनेगा, देन जाके धीरे धीरे प्रेशर बन सकते हैं, और एल्स इधर थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल हो जाएंगे। बट यूसीबीओ के साथ लेफ्ट हैंड साइड से निकल चुके थे, एक शॉट लेने की कोशिश भी कर रहे थे बीच में, बट उसको डॉज किए, रोके और पासिस के लिए गए। तो एंड टू एंड गेम फिलहाल के लिए दिख तो रहा है, बट एक चीज़ है कि राइट साइड को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है बेनो 7 की तरफ से, जिसको थोड़ा सा वर्सेटैलिटी दिखाना होगा अगर सागनी के खिलाफ आपको गोल करना है। Yeah, I think you need to get that in, because Shagnik, even as a player, has been quite crafty, especially in that final third, right? And the previous goal that he just scored with KDB, that was also an example of what Shagnik can do when he starts playing seriously. Look at him, he's got his game face on, but Shantan almost breaking loose, and it took those long legs from Ashraf Hakimi to get the ball back, and now an instant pass to a driven lob through was tried by Bengaluru FC, but that was kind of well read by Shantan there. Shagnik tries to break free, but a charge tackle, sliding one comes in, as Bengaluru FC again trying to build up their play. It's one each on board, approaching the end of the first half. Big question is, do we see somebody taking a lead over here? Because now, for what it's worth, both these players have been trying to go long on the balls, right? Both these players have been trying to get those driven lob throughs, and R9 is fighting it out there, but not really succeeding. You can't just beat Lucio. एक डिफेंडर जो कि आपको बहुत ज़्यादा तंग कर सकता है, लेकिन एक नहीं, दो भी नहीं, तीन को यूज़ करते हैं, वैन डाइक, लुशियो एंड माल्डिनी, और ये तीनों में से किसी के भी सामने आप चले जाओ, आप इजीली बीट नहीं कर सकते उनको। और ये बहुत बार देखने के लिए मिला है, सिनेरियोज जो है वो कुछ जगहों पे अनएक्सपेक्टेड गोल्स जो है, अनएक्सपेक्टेड टैकल्स जो है वो निकाल लेते हैं। इवन पीछे भी अगर आप रन निकाल रहे हो, आप चेस भी कर रहे हो,
उस जगह से भी वो स्लाइड करके अपने हील से बॉल को खींच के लेके आते हैं। तो डिफेंस तो काफी है, लेकिन अभी के लिए वो विनर कौन मारेगा? मैं चाहता हूँ कि इस पे एक रिजल्ट आए। 2 शॉट्स लिए गए थे ईस्ट बंगाल एफसी की तरफ से, जिसमें से एक शॉट ऑन टारगेट था जो कि गोल हुआ और एक आउट ऑफ टारगेट था। तो या एंड ऑन द अदर हैंड पोजीशनिंग के मामले में भी ज्यादा गैप्स है नहीं, पासेस भी सिमिलर है, बट टैकल्स ईस्ट बंगाल एफसी के है 13। इससे एक चीज तो पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा अटैकिंग रहेगा इधर सागनिक। हर बार वो जाके एक बार नॉक तो जरूर किए है गोल पोस्ट। I think, of course, at the back of my head, I would want Shantan at least to go on and win this game, right? Just want him to end his run in his campaign with a win, with a victory. We have been talking about it. It's important to kind of reassure not just their fans, but also the members of the club that, yeah, he deserves to be retained. And every athlete has one of those dip fails, right? This was one for Shantan, as he looks to fight back, looking to try and score a goal. This time went right from the middle, but Shagnik was so prepared. Ronaldinho. Now with that, let's see Shagnik, what does he intend? But both these players just fielding Lucio, and one of the toughest defenders to go past. And we knew, with the new cards coming up, this Lucio card was kind of getting replaced. The older one was kind of getting replaced with Eder Militao. We had seen that on multiple occasions. But once the new Trophy Titan card came up, we knew, he's not going to go anywhere. He's going to make that comeback. And yes, as we approach the end game of FIFA 23 also, I think the next promo being team of the season, I don't think a lot of players can replace what Lucio or Virgil van Dijk basically put on the field. देखिए अभी सिर्फ आखिरी जस्ट आखिरी 35 मिनट्स बचे हैं इस पूरे इंटायर लीग स्टेज के अंदर और ईस्ट बंगाल एफसी के लिए। और ये 35 मिनट्स क्या एक आखिरी विन लेके जा पाएंगे? मे भी पूरे मैचअप पे नहीं, बट एक सिंगल विन क्या वो मिलेगा ईस्ट बंगाल एफसी को? ऑन द अदर हैंड बेंगलुरु एफसी वो चाहेंगे कि वो जीत के साथ जाए इधर प्लेऑफ्स पे। जब वो लैंड पे बैठेंगे उनके दिमाग में ये रहे कि यस, जो लास्ट मैच हमने खेला था वो हम जीत के आए हैं। सो ये भी आपको कभी कभार कॉन्फिडेंस की ज़रूरत सबको होता है, वो जितने भी बड़े प्लेयर हो जाए सबको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। कॉन्फिडेंस अगर है तभी उनका परफॉर्मेंस जो वो निकल के आता है, तो एक कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रहता है। बट देखिए पासिंग चल रहा है और धीरे धीरे करके बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं। सागनिक चाह रहे हैं कि इधर आगे आके प्रेशर क्रिएट करे और सागनिक पीछे पास दिए रोनाल्डिनियो को। रोनाल्डिनियो आगे गए और राइट हैंड साइड से फिनिश करके चले गए। लाजवाब 2-1 फासला बनता हुआ, और जो लीड जिसके बारे में हम लोग इतने देर से डिस्कशन कर रहे थे कि कौन लेंगे, फाइनली पता चल चुका है। वो होने वाला है और कोई नहीं, वो होने वाले है सागनिक। This was sort of coming from his side, right? Shagnik, the way he just moves around with the ball, making those passes, that confidence in that final third is all it requires. And between the two Bengali boys, Shagnik just proving to be one step ahead, but Shantan needs to strike back. A lot on the line for him. Like you said, even in the local scene, you usually see these two players going head to head against each other. Yes, we have a lot of the other Bengali talents also, but they have been the creme de la creme of what we have from West Bengal as a state in FIFA at least. But now Shagnik en route, trying to get his third. But nice sturdy defense being showcased, and no, this is exactly not how I pictured to have the final game of eISL end, right? Because still there was something more remaining. I could sniff a goal in the making. It could be Bengaluru, could be Shantan striking back, because for what we know, this guy is a fighter. He never just backs off without a fight. But yeah, I mean, commencement of the second half, it was kind of making me feel like Bengaluru FC
in terms of possession, I think Shagnik was doing really well. Of how well he had adjusted and adapted to what Ben07 was putting on the table. And from Ben07, I was kind of missing that little bit of innovation, right? Trying to go for something different. When you kind of go way conventional, you sort of are anticipated. And this is where breaking the pattern isn't really easy. When you kind of suddenly have to make that switch just while the match is going on. And very few players can do that. And those players that have done that are moving to the playoffs. So that being said, yeah, this match will of course end, but if TT, I have to ask you, you've seen them in the past also. Who did you think was the better player of the Ben07 एंड सागनी के बीच में day? Yes. देन इधर कह सकते हैं कि गेम उतना भी ज्यादा जो है वो एक तरफा था नहीं, बहुत ज़्यादा क्लोज था, दोनों ही काफ़ी अच्छे कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन टर्म्स ऑफ अटैक अगर बात किया जाए तो सागनिक काफ़ी अच्छे थे, क्योंकि सागनिक कॉन्स्टेंटली वो प्रेशर बना के रख रहे थे और जो सागनिक के तरफ से गोल्स आए वो दोनों के दोनों उनके बिल्डअप से आए हैं। बट ऑन द अदर हैंड इधर जो बेनो7 के पास आया था वो एक पेनल्टी के साथ, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो या मेरे लिए सागनिक बेटर प्लेयर थे। And even in the past, right? It's so difficult for a player, once you go into retirement and then make a comeback and then play so well in season one, make it to the playoffs. Because this time we're not going to be witnessing chant in playoffs, right? Last time's, the end game for East Bengal FC was quite dramatic because even if you compare that previous season with this one, when they had Ankit Gupta, when everybody thought that, yeah, this is one of those teams that goes on to win, and suddenly you see when Ankit Gupta used to come, he used to be like this chill guy from Mumbai and just always smile. And we used to have regular interviews. I don't know why they stopped doing that this season. But yeah, when we used to get him on interviews, he'll like, yeah, bro, bhai, kya haal hai? Like, mast sab badhiya, ek number, chill hu. Like, goal kaise mara? मैं ऐसे ही फील में मार दिया, मजे में मार दिया. And I'm pretty sure, I think the videos would still be there. And Azim and I, when we were on the desk, would be like, all right, this is a player that plays FIFA for fun, and he never competed professionally or something. And then the biggest question was, do we sort of retain such a natural talent? Do we get to see him this season? Which unfortunately did not happen. And he's gotten back, to being one of the coaches in a club or an academy. I don't know exactly, but now he's teaching players football. And I sort of still playing FIFA casually. Recently, I had unboxed a very nice card. I don't remember exactly what. So coming back to what I was trying to say is that when Ankit Gupta was having the form of his life, that was something that even Ben07 channeled, and we could see that improvement in his game. Even when we got Ben07 up for interview, he used to give all the credit to Ankit Gupta. It's like, game क्यों जीता? क्योंकि अंकित भाई ने साथ दिया. I was like, what the hell? He's like, yeah, he supported me. And from that Ben07 to going on to solo winning games, even when East Bengal FC were going through such tough times. I remember when Ankit Gupta had his dip right towards that very end, and there was a lot of drama that happened. And then there was a moment in the playoffs, you kind of saw that Ankit Gupta had lost his smile, and he started feeling pressure. And this is where I realized that, okay, he is one of those players that can perform really well when there's no pressure or something. But once जब चेहरे पे 12 बज जाते हैं, when you know that if you lose this game, then it's all gonna fall down, that is where he crumbled. That is where I think players like Saransh, all these players that have that LAN experience, take that one step ahead. That's where they go up. But yeah, we were really hoping to see him. But yes, we have seen even Shantan grow in his own pace. But yeah, that was the last that we get to see of him, at least in this season. And I just hope we get to see more of him in the next. बिल्कुल, हम लोग चाहेंगे कि हम लोग और सीजन जो है वो उनको देख पाए. बट ये आखिरी गेम में हुआ क्या, वो बहुत जल्दी पता चलेगा. आई थिंक बहुत लोगों के लाइक बहुत जो भी व्यूअर्स है सबके मन में यही चल रहा है कि हुआ क्या, लाइक क्या रिजल्ट था. इज लाइक हम लोग भी उसी के लिए वेट कर रहे हैं. बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि क्या रिजल्ट था और क्या इधर Ben07
कमबैक कर पाए हैं कि नहीं, या फिर सागनिक और भी गोल्स जो है वो दागे हैं। लेकिन एक चीज़ जो है इस पूरे एंटायर EISL सीज़न 2 के अंदर शुरुआत से लेके एंडिंग तक एक चीज़ तो कह सकते हैं कि जो प्लेयर्स प्रॉब्लम्स पे थे, जिसके बारे में हम लोग इसके पहले भी बात किए कि जो प्लेयर्स एकदम स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स पे थे, वो प्लेयर्स इधर डे बाय डे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किए हैं। कुछ प्लेयर्स का जिस तरीके से सीजन चालू हुआ, लाइक बहुत अच्छे से उनका फॉर्म डिप होता हुआ दिखा, और वो डिप होने के बाद ऊपर भी आया। तो ये 2 महीने के टाइम स्पैन के अंदर हमने प्लेयर्स के दोनों ही साइड को देख लिया, जब उनका एकदम ग्लोरियस मोमेंट चलता है और थोड़ा बहुत डाउनफॉल भी। तो इससे एक चीज़ तो पता चल रहा है कि गलतियाँ जो है वो किधर-किधर होता है, और ये प्लेयर्स के अंदर क्या कैपेबिलिटी है कि वो गलतियों को कितना जल्दी सुधारते हैं। राइट। तो ये चीज़ बहुत बहुत अच्छी है कि वो बहुत जल्दी-जल्दी गलतियों को सुधारते हैं और इधर कमबैक करते हुए दिखते हैं। बट वो मोमेंट ऑफ ट्रुथ कहीं न कहीं भी आ चुका है। क्या लगता है फिक्सेस क्या हो? Well, I had a quick gander at the scorecard. I know the results, but I'm not going to reveal until it's Oh. officially out. So, for one last time in the league stages, let's take a look at the scorecard and find for ourselves what the result was. It's going to be a 3-2 scoreline. So, we could see that last moment drama, and unfortunately could not capture that live. Beno 7 did manage to score one in, and Shagnik also responded with a goal of his own. So, it's a 3-2 victory, and for the MVP, I don't think there's going to be any speculation. I'm pretty sure it is going to be Yeah. CJ. That 6 goal is going to help him clinch that, but I don't know if he's going to be completely happy, but not sad either, right? Just kind of being 2 goals shy of being the highest scorer in terms of individual prowess. So yeah, I think that being said, we are done. 55 matches over. It was a long, grueling journey, but yes, it felt very, I kind of enjoyed every single match, right? Everyone had a certain storyline that went along with them. And we did find our top 6 teams, or rather top 6 clubs. Let's take a look and find out who they were if you are a new viewer. So FC Goa, they still go on to become the only club that's undefeated, a new feather to their to their cap, and at this point, the biggest favorites to win this entire tournament. And then next up, we have got Northeast United FC, who kind of hit a dent on their on FC Goa's flawless run, and that draw did come from them. Then we've got Mumbai City FC, 2 lads playing eISL season 2, and in fact, they're eISL for the first time. They have been ever so good, Saki and Crusher. Then we've got Bengaluru FC. We just saw them in action. CJ and Shagnik, clear favorites in land also. Then Hyderabad FC and Kerala Blasters FC. Those last games, dramas, those heart attacks, those panic attacks, those anxiety shots, they've given it all. But still were the 5th and 6th team that made it. But yes, you got a feel for clubs like Chennai FC and ATK Mohan Bagan surely missing out on their spot, especially ATK Mohan and Bagan, considering this time they were so close, and Chennai FC being the defending champions haven't successfully made it to the playoffs. जी हाँ, लेकिन एटीके मोहन बगान शायद बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए थे, और उधर से वो बैक टू बैक 2 गेम्स ड्रॉप करके क्वालिफाई नहीं कर पाए। बट देखिए, यही होता है कि आप जिस टाइम पे फॉर्म चाहते हो, उस टाइम पे ही फॉर्म जो है वो कहीं न कहीं निकल जाता है। तो ठीक है, लाइक टॉप 6 क्लब्स हम लोगों को मिल चुका है, जो कि प्लेऑफ्स पे एक दूसरे के खिलाफ भिड़ने वाले हैं 2 दिन 6th and 7th को, और वो 2 दिन यानी कि एक का अलग ही लहर आ जाएगा। किसी के लिए खुशियों का, किसी के लिए थोड़ा भावनाओं का, और किसी के लिए दुख का। तो देखते हैं क्या होता है और किसके लिए कौन सा इमोशन रहता है। I just hope all you fans that are watching, you have your jerseys on, right? And even if your club hasn't made it, don't forget to find out who's going to win the title of Ultimate Glory, which club is going to be participating in the FGS play-in tournaments, who will be those 2 players, and a lot to find out, a lot of action awaits. We're going to be back next week on the 6th and 7th of May. Till then, it's me, Fixes, and along with me is going to be TTR signing out.